नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन आप सभी का जो है वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। जी हाँ, इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने जो है आईएएस मेंस की जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। द इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर, द इनलेट एंड थ्रोट diameter of a horizontal venturimeter are 30 centimeter and 10 centimeter respectively. The liquid flaming through the liquid flaming through the net is water. The pressure intensity at inlet is 13.734 Newton per centimeter square, while the vacuum pressure head at the throat is 37 centimeter of mercury. Find the rate of flow. Find the rate of flow. Assume that 4% of assume that 4% of the differential head is lost between the inlet and throat. Also find the value of CD. Also find the value of CD for venturimeter. ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जो है हमको क्वेश्चन बोल रहा था, इनलेट एंड द थ्रोट डायमीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर आर 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लिक्विड flaming through the net is water. The pressure intensity at inlet is 13.734 Newton per centimeter square, while the vacuum pressure head at the throat is 37 centimeter of mercury. Find the rate of flow, assuming that 4% of the differential head is lost between the inlet and throat. Also find the value of CD for venturimeter. Okay, तो यहाँ पे एज अ D1 हमारा क्या हो जाएगा, 30 centimeter. D1 is equal to 5/4 D square. D1 square. So put the value
706.85 centimeter square. T2 is equal to 10 centimeter. T2 is equal to pi by 4 T2 square. So here get the value 78.54 centimeter. Intensity of pressure P1 13.734 Newton per centimeter square, which we'll convert in 13.734 into 10 raised to power 4 Newton per meter square. Get the value over the P1 upon rho g. So here we have 13.734 multiply with 10 raised to power 4, 10 cube into 9.81. Get the value 14 meter of water. Now P1 by rho g is equal to minus 13.6 into height column of mercury 1 minus 5.032 of water column. Then after that we have to get the differential head. How we calculate it? To the formula. So apply that formula here for the differential head. Differential head. Differential head. H is equal to P1 minus P2 divided by rho g. Rho g. Get the value of head 19.032 meter of water. Now HF is equal to, we have the condition 4% of head gives the value 0.7613 meter, and coefficient of discharge, here we have square root of H minus HF divided by H, gives the value of 19.032 minus 0.7613 divided by 19.032. Final value is equal to 0.98. 0.98. Alright, then moving ahead, Q is equal to CD multiply with A1 A2 square root over A1 square minus of A2 square multiply with square root 2g h. Value of Q is equal to 0.14969 meter cube per second. Right? Justify this value. Now next question. Further we move ahead. For the pump as shown in figure, for the pump as shown in figure, total friction head loss is 6 meter. Total friction head loss, friction head loss is 6 meter if the pump deliver, if the pump deliver 40 kilowatt of power of power to the water. Determine the exit velocity. Determine the exit velocity V and the flow rate
q. Okay, let's we have to solve upon this. Now here we have the question page, then here we have the arrangement for this. P as in pump, ओके। यहाँ से अपर हैंड द डिस्टेंस इज टू बी शोन 3 मीटर। यहाँ से हमारा फ्री हैंड नंबर 1 पॉइंट इज टू बी स्टार्टिंग ऑन, कहाँ तक जाता है, ये जाता है अप टू द डेप्थ ऑफ 5 मीटर तक। ओके, here the point 2 is to be shown, exit velocity over here v at exit of pump, exit of pump, d as in diameter 1 to 0 mm। ऑल राइट, 1 और 2 पॉइंट दिए रहते हैं तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन। सो 1 1 एंड 2 के बीच में क्या लगाएंगे हम, पॉइंट्स के बीच में बर्नौली इक्वेशन। क्या हो जाएगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 प्लस EP इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी V2 स्क्वायर अपॉन 2G plus Z2. Put these value, get the value over the EP plus 0 plus 0 plus 0, remaining 3 are to be 0, V square upon 2G plus 3 plus 6। यहाँ पे Z के साथ जो है हेड लॉस भी ऐड होता है, प्रेशर तो 0 है दोनों का, तो यहाँ पे EP के रेलेवेंट में हमारी इक्वेशन आ जाती है 0.05098 एग्जिट वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 9। एक जो है इक्वेशन नाम दे दो इसको। नाउ मूविंग अहेड, पावर इज इक्वल टू रो टाइम्स G टाइम्स Q इंटू EP। नाउ Q is equal to, we have the area into velocity. So here we have pi by 4 into 0.05 square multiply with the exit velocity. So here we have the value P by root G H कीजिए गए, टोटल हाइट EP से कैलकुलेट करें, पाई बाय 4 इंटू 0.05 स्क्वायर इंटू एग्जिट वेलोसिटी। हमको पूरी वैल्यू पुट ऑन करने के बाद EP कैलकुलेट हो जाता है 2080 अपॉन एग्जिट वेलोसिटी। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में कंपेयर करेंगे।
So here we have 0.05098 b square plus 9 is equal to 2080 by b। अब कैल्सी में एक सॉल्व फंक्शन होता है, तो उसकी मदद से आप लोग इसे इजी पीजी वे में सॉल्व कर लोगे। आई नो वेरी वेल। 32.7 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी एग्जिट वेलोसिटी की। एग्जिट वेलोसिटी के बाद डिस्चार्ज पाना तो बहुत ही आसान होता है। पाई/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू द वेलोसिटी। Velocity is 32.7 meter per second. Put the value, get the answer in meter cube per second. 0.0642 meter cube per second. Easy. That's your answer for the question. चलिए, आपका जो है ना सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग को एक काम करना है, वीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करना है। जीवन में साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू साथियों।